Hello everyone, welcome to this session. In this session, we are going to learn how to work with lists and dictionaries of Python. This is the fourth chapter of your book, Informatics Practices 11th class. This is the first part of this session, and in this session, we are going to learn about the list topic, and following topics we are going to cover related to the list. The first one is we are going to introduce the list. Then we are going to learn the operations that can be performed on list. We are going to learn how to access elements available with list. Then various built-in methods that are available with list. And how can we manipulate list operations. So here we go. Yes, so what is a list? List is basically collection of elements. It is collection of heterogeneous elements. Collection of genius elements separated by comma sign and closed within square brackets. So these are certain characteristics of list. Let us discuss them one by one. List is collection of heterogeneous elements. Heterogeneous elements means elements with different data types. Means list can contain some of the data is integers, or some of the data is float, and some of the data is strings. So all these different data types can be collected together. Unlike arrays, arrays homogeneous collection होता है, and list is heterogeneous collection of elements separated by comma sign. So how we are going to separate elements of a list? By a comma sign. And list elements are always enclosed within square brackets. पहले तो हम ये देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी. अभी तक हमने जितना प्रोग्रामिंग सीखा है उसमें सपोज मैंने मेरे प्रोग्राम में जाके एक स्टेटमेंट लिख दिया x equals to 5. What this statement was doing exactly? It was making a memory block. It was creating a memory block with name x. इस ब्लॉक का नाम x होता था and value 5 was stored inside it, है ना. This was the assumption of variables for us. Okay, तो इस तरह से ये बन रहा था. तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा था. अब अगर मुझे एक से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो मेमोरी में स्टोर करना है एक ही मेमोरी लोकेशन के अंदर, then what I will be doing, I will be making use of collection और iterators. So यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैंने x लिखा और x के अंदर जाकर मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए. स्क्वायर ब्रैकेट्स आर द आइडेंटिफिकेशन फॉर लिस्ट. अगर आपको पाइथन में इंफॉर्मेशन कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखती है, इसका मतलब है कि वो लिस्ट है. और यहाँ पर जाकर हमने एक इंटीजर वैल्यू ले लिया, ये मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया है, ये मैंने एक और स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया है, यहाँ पर जाकर मैंने एक फ्लोट वैल्यू ले लिया. सो आई हैव टेकन डेटा विद डिफरेंट डेटा टाइप्स. So this is a list, and how it will be interpreted in computer's memory. So when it will be stored inside memory है, इसके अंदर मेमोरी के अंदर जब ये क्रिएट होगा तो लिस्ट मेमोरी के अंदर कैसे क्रिएट होती है. सो इट विल बी स्टोर्ड समथिंग लाइक दिस. यहाँ पर मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक्स होंगे पर सबका नाम एक होगा. ओके, सो लेट मी मेक द दिस मेमोरी ब्लॉक्स. ये यहाँ पर हमने एक और बनाया और ये 5 मेमोरी ब्लॉक्स वी नीड. इसको मैं डिलीट कर देती हूँ. नाउ दिस होल एलिमेंट्स, ऑल दिस एलिमेंट्स विल बी कंसीडर्ड एज वेरिएबल x. इसको हम x का नाम दे देंगे. इस पूरे बॉक्स का नाम क्या होगा? दिस विल बी नेम्ड एज x. ये पूरा बॉक्स x कहलाएगा और इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से रखे जाएंगे. 34, then 56. Then we have the string as pp, then we have the string as kkk, and then we have the number as 90.89. इनके फॉन्ट थोड़े से हम छोटे कर लेते हैं, they can be stored properly. सेम ओवर है, यहाँ पे भी मैं इसके फॉन्ट्स थोड़े से छोटे कर लेती हूँ. ओके, सो दिस इज द वे लिस्ट विल बी इंटरप्रिटेड. ओके,
तो लिस्ट के डेफिनेशन में क्या है, लिस्ट हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है. दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा साइन एंड दे आर एनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. And how they will be stored? They will be stored in this manner. And for identifying each and element separately, individually in a list, list elements are identified by their indexes. है ना. तो इंडेक्स कैसे दिया जाता है? तो जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्सेस जो रहते हैं दे ऑलवेज स्टार्ट विथ 0. दे आर नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0 एंड दे आइडेंटिफाई द कलेक्शन एलिमेंट्स. तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल बी आइडेंटिफाइड बाय इंडेक्स 0. द सेकेंड एलिमेंट विल बी आइडेंटिफाइड बाय इंडेक्स 1. थर्ड एलिमेंट विल बी आइडेंटिफाइड बाय इंडेक्स 2. फोर्थ एलिमेंट विल बी आइडेंटिफाइड बाय इंडेक्स 3 and fifth element will be identified by index 4. So like this elements of list are identified by their indexes. तो इनको हम किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? We are identifying them by indexes. So they are known as index. This thing is known as index. Let me put an arrow also. This thing is known as index. अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है तो सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज पीपी. फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज 90.89 और जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज 34. सो दिस इज द वे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इनसाइड द लिस्ट. One more characteristics of the list is that list is mutable in nature. List is mutable. Mutable means changeable. Elements of list can be changed. Means you can add elements to the list. You can update values of the elements available with the list. You can delete elements from the list and you can either delete whole list from the computer's memory. So list is mutable in nature. This is another characteristics of list. Now let's see the programs related to list. How can we create list in Python? So for that purpose I have opened my Python IDLE and now I am going to make a list over here. So let me save this file and I am going to save this file on desktop and here I will be saving this file in this 11th AB portion, naming it as list1 and now we are going to create a list. So list can be created in multiple ways. The simplest one is take a variable, put a square bracket in front of it. This particular command is going to create an empty list. When you are going to print this list, print X. So this is going to print an empty list. अच्छा ये list है नहीं है, list कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? We are going to print its type. क्योंकि अभी तो मैंने X print कर दिया तो X list है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? तो हम लोगों ने एक फंक्शन सीखा है that is known as type function that prints data type of a variable. तो जैसे मैंने X का type print किया, you will be getting a message class list. So this is a list and this is the way we can create an empty list. Now what if you want to create a list with multiple values, है ना? तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे? We will be taking another variable. Again we are going to place square brackets here and inside this square brackets we can write some values. This is 1, 2, this is 3, 4, 5.0, then 6. Like this we have created a list. And if you want to view the contents of list, so we can print list y like this. Print y, it is going to print contents of list y. So this is the way we can create a list. Let us discuss certain methods related with list. So for this purpose, now we are going to create a list. For creating list, I have taken a variable x equals to square bracket. If you are going to write a statement like this in your file, it is going to create an empty list. So this is the way to create an empty list. And if you want to see its content, nothing will get printed. But yes, if you are going to print its data type,
using the function type. It is going to print its data type as list. So now I'm pressing F5 key to view the answer, and you can see that as I have not entered any value over there, I'm getting an empty list over here and its type is list. Now we are going to put certain elements inside this list, and for this purpose I will be keeping some numbers over here. So I have entered this list over here, and now see the change in the output. Now we are getting certain numbers in the list. Now let us discuss certain methods related to list. The first method is append method. Append method. What does this method does for you? It is going to add either a number or a list or a tuple or a dictionary at the end of the list. So append method adds anything at the end of the list. It can be a number, it can be a list, it can be a tuple, it can be a dictionary, or it can be a string also. So we can add any data type at the end of the list using the method append, and its syntax is very simple. What you have to do, you have to use the list object followed by the method append and then the element that is needed to be added. So this is the way to add an element at the end of the list. Let's see the output by adding something after this list. So in this program, what I am going to do, I am going to use the list X over here, dot method append, and at the end of this append method, now I am going to add a number 56. 56 is already added. Now we can add similar elements also, but still I am going to take some other number over here. I am taking 1, 2, 3. So this is a number that I am going to add to a list. तो यहाँ पर अच्छा ऐड कर दिया, हमने उसको प्रिंट नहीं करवाया. So let us print this list 2. उसको सेव किया, and you can see the change over here. This is my previous list, and now number 21, 2, 3 is added at the end of the list. देखिए आखिरी में ऐड हुआ है नंबर, है ना, और अभी मैंने नंबर ऐड किया है. This number can be changed into a tuple also. So for keeping a tuple, I will be putting parenthesis, and I am going to add some more numbers here, 76, 56. So this time I am adding a tuple to a list. So you can see this is the way a tuple can be added. I can add another list also, and for adding another list, what I have to do, I have to just change this parenthesis into square brackets. So you can see the change when a tuple is added, when a list is added, and when a number is added. You are getting different outputs, and this is the way questions can be prepared in the exams also. Okay, so I have added another list. Now if I want to add a string over here, we can add a string too. So यहाँ पर मैंने डबल कोट्स लगाए हैं और इसके अंदर जाकर मैंने एक स्ट्रिंग ABC लिख दिया है, and you can see the output. So this is the way we can use append method to add an element at the end of the list. So this was the first method that we studied. Now the second method is the insert method. What does this insert method does? Insert method inserts an element. Inserts a number, a list, a tuple or a dictionary or a string at any index. So see the difference between the append method and the insert method. Insert method list में कहीं भी किसी भी इंडेक्स पर किसी भी डेटा टाइप को ऐड कर सकती है, whereas append method हमेशा आखिरी में एडिशन करती है. So this is my insert method, how it will be used. और चूंकि मुझे एलिमेंट भी ऐड करना है,
और किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना है. So I need one more parameter and the position of this parameter is at first position, means first you have to pass an index, a position where you want to add an element and then the element that is needed to be added in the list. तो लिस्ट के अंदर जब भी आपको मॉडिफिकेशन करना है, नए एलिमेंट्स डालना है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर, so we are going to make use of index method. Now let us change this append method into an index method. Okay, so sorry, insert method. So I am going to write insert over here. My element is ABC and suppose I want to add it at index 6. So I will pass 6 as index and then element. Now I am going to save my file, pressing F5 key, and you can see the output. See, this element is present at index 0. This is present at index 1. This is at position 2, index 2. This is at that index 3. This is at index 4. This is at index 5. And this is the index 6. So what system has done? It has added ABC at index 6 and it has replaced all the elements after this index 6. So this is the way insert method works. It will take index as parameter, an element as parameter, and it is going to insert that element at the end of the, at a particular index in the list. So this is your insert method. Now the third method over here is the extend method. Extend method is a little bit similar to append method only, but what it does, this is the extend method, and what is that does, it adds a list, at the end of the list. It adds a list at the end of the list. So whenever we are using extend method, exclusively it is used with list only for concatenating list, and as a parameter we are going to pass a list over here. Okay, so for joining multiple lists we are making use of extend method, and that list is added at the end of the list, means extend method does two tasks. It adds a list to a list. Secondly, the list is added at the end of the list. So let's see, I am taking another list as y and I am putting certain numbers here, 45, 55, 66, and now I am going to use this extend method, and here I am going to pass y as parameter, and let's see the output of this, and we are getting numbers over here. So whenever we are using extend method, the data is added in this way. अच्छा, आप एक डिफरेंस देखिए, जब मैंने अपेंड के अंदर लिस्ट पास किया था तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे थे, है ना. तो जब हम अपेंड मेथड के साथ लिस्ट को ऐड करते हैं लिस्ट के अंदर, सो अ लिस्ट इज एडेड एज अ सब लिस्ट, जबकि यहाँ पर जब मैंने दो लिस्ट को ऐड किया है तो सेकंड वाली लिस्ट के एलिमेंट फर्स्ट वाली लिस्ट में लिस्ट की तरह नहीं आए हैं, दे आर जस्ट लाइक नॉर्मल नंबर्स. सो दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन extend method and append method. So let's move ahead and discuss some more methods. ये जितनी भी methods अभी मैंने आपको डिस्कस की, they were adding something to the list. एंड में कर रहे थे, बीच में कर रहे थे, कहीं भी कर रहे थे, but they were adding elements to the list. Now if we want to remove list elements, अगर आपको list के elements remove करने हैं तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली तीन मेथड्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज द रिमूव मेथड, एंड व्हाट रिमूव मेथड डज, इट रिमूव्स एन एलिमेंट, फ्रॉम द लिस्ट. तो आपको यहाँ पे क्या पास करना होता है, आपको जिस एलिमेंट को डिलीट करना है वो आपको पास करना है. You have to pass the element itself.
So you are going to use list, remove and the element that is needed to be removed. और यहाँ पर जाकर हम यही करते हैं. यहाँ हम गए और हमने यहाँ पे लिखा x dot remove and then we are going to pass an element 78 for removing it from x. अभी मुझे y का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ and then F5 की प्रेस किया हमने. So you can see that 78 is not in my new list, that is remove. तो एलिमेंट की वैल्यू से डिलीशन करना है तो रिमूव. बट अगर आपको इंडेक्स के बेसिस पे रिमूव करना है, इफ यू वांट टू रिमूव एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, so we are going to make use of the method pop. So we are going to use pop. Pop method takes an index. Pop method takes an index, or you can say it removes an element present at a particular index present at a particular index. एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर आपका एलिमेंट रखा है और आपको उसको रिमूव करना है तो उसके लिए हम मेथड कौन सी यूज करेंगे? वी विल यूज द मेथड एज पॉप. और यहाँ पर हम एज अ पैरामीटर क्या देंगे? इंडेक्स. वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा. सो लेट्स सी इट. यहाँ पर हम गए एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस रिमूव वर्ड एज पॉप, and instead of passing number over here I am going to pass some index. मैंने यहाँ पे 5th index डाल दिया है. Pressing F5 key and you can see the element that was at index 5 is removed. See, this is 0, 1, 2, 3, this is 4 and this is 5. तो 5th index पे 78 रखा था and now this element is removed from the list. So this is my new list. So this is the way pop works. So pop and remove तो क्या करते हैं? Basically they are removing elements from the list. If you want to remove whole list from the memory, then which command will be used? For this purpose we can use the command del. So if I am going to write del command, and after writing the del command, if I am going to use my list, see what happens. Now, as I have removed my list from the computer's memory, it is not existing. And if I am going to use this statement print x, means if I want to use the list that is already deleted, system is going to give me error for this purpose. So this is the way to remove whole list. So del command is used to remove a list from computer's memory. तो रिमूवर के लिए हमने 3 मेथड देखी हैं. लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए हमने 3 मेथड देखी हैं. अगर आपको अपडेशन करना है लिस्ट के किसी एलिमेंट में, सो हाउ टू डू इट, मतलब हमने इंसर्ट की मेथड देख ली है. नाउ लेट्स सी द अपडेशन आल्सो. चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अपडेट करना बहुत सिंपल होता है लिस्ट में. सपोज आई वांट टू चेंज एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स 5 विथ वैल्यू xyz. ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग. आई वांट टू चेंज element present at index 5 with value xyz. What I will be doing, I will write x, I will take square bracket for indexes, then I will put the index number, that is 5, and equals to sign, and then I am going to put a new value. So index 5 will be changed with new value xyz. Let's see the output. मैंने यहाँ पर x रखा, सेव किया, F5 की को प्रेस किया, and you can see the output that element present at index 5 is replaced with a new value xyz. So this is the way we can perform updations in list. So this is the way we can update elements of list. Elements can be changed, elements of the list can be changed in another way also, and for that we are going to discuss a method sort. Sort method what does this sort method does? It arranges elements of list either in, ascending order,
or descending order. Let's see how sort method works. सबसे पहले तो sort method की एक कंडीशन होती है, ये स्ट्रिंग्स पे अप्लाई नहीं होती है. तो अगर आपकी लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, दैट इट विल रिफ्लेक्ट एन एरर. ओके, तो सबसे पहले तो मैं इस स्टेटमेंट को कमेंट करती हूँ. वाई? बिकॉज आई हैव एंटर्ड एन स्ट्रिंग ओवर हियर. तो मैं सबसे पहले इस स्ट्रिंग को हटा देती हूँ by comparing these two statements, and now I'm going to use this sort method. और मैंने यहाँ पर ले लिया print, and how to use it, x dot sort sort. Sort method without any parameter will arrange the elements of your list in ascending order. Now I saved my file, press F5 key. Okay, sort method does not returns anything. What we have to do over here, we have to write the statement without print, as it does not returns anything. We will write our command as x dot sort, and then we are just going to print x over here. क्योंकि sort method क्या करेगी, एलिमेंट्स को अरेंज करके x वेरिएबल में स्टोर कर देगी. तो हम जब x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, then a sorted list will be printed. So you can see that this था 98 था यहाँ पर, फिर 87 था, फिर 76 था, and all these elements are arranged in ascending order now. छोटे से बड़े क्रम में अरेंज हो गए. What if I want to arrange my elements in descending order? So I will write this command as x sort sort, and a parameter reverse is used over here, reverse, and this reverse is set to true. By default it is false. If you are going to set it to true, it is going to print elements of list in descending order. So now if I am going to print x over here, my elements will be arranged in descending order. Now this true is giving me error. Why? You can give me the reason. As in Python, true is defined as capital TRUE, and I was using it in small letters, and that's why it was giving me error. Now you can see that the contents of this list are arranged in descending order. So this is the way we can insert elements in the list, update elements of the list, and we can arrange elements of the list. In next part of this tutorial, we are going to learn about accessing elements of the list and dictionaries.